to another chapter of our psychology, that is probably that is the last unit I am going to interact with you today, and the topic for discussion is on physiological basis of behavior, and mostly I am going to teach you on meaning and the structure and the functions of the neuron. तो आमे ता विषय आज जानिबा कि structure and functions of the neuron, how it is important to our life, because all our human behavior, our thought process, our every external activities or internal activities we are going through are controlled by the nervous system. So it is very important to understand the structure as well as its functions. So it is coming under the physiological basis of behavior. Under it, first we must understand what is neuron. You see, neuron is the basic unit of nervous system. ओडिया रे कहिवा को गले neuron को आमे स्नायु कोश बोली भी धरी थाउ, and majority of the time it is also known as nerve cells. Synonym of it as the nerve cells. Both are equal, nerve cells, or it can also be called as the neuron. So it is the basic element of nervous system. It is the basic it is the cells within the nervous system. That's why it is called as the basic unit of nervous system. Nearly 12 billion neurons are found in human nervous systems. You see, 12 billion neurons. There is not a single variety of neurons available in human body, human brain system, nervous systems, but there are 12 varieties, and each variety of neuron are specialized in certain specific cells on which informations are transmitted. Neurons are specialized cells that convert various forms of stimuli into electrical impulse. Here informations are transmitted and processed, and informations are transmitted to the nervous systems. At the same time, nervous systems brain interpret the that information and provide signal to our body. You see, whatever the meaning we are getting towards the external world are because of the nerve cells or because of the neuron. See, dear students, what happens is that whatever I am teaching you, it is audible to you. Okay, here also another receptors working with between you and me as a via media in terms of voice, in terms of the voice and language I am representing you, it is reaching to you. मु जो भाषा रे किंबा language टा व्यवहार करूची तुमको बुझेबा पाई, तो sound becomes ए तमे सेटा साउंड टा केमिति तमे सुनिलो, साउंड टा तमरो रिसेप्टर आसिला तमरो कान द्वारा ही तमरो रिसेप्टर आसिला, आ सेटा तमरो ब्रेन रे प्रोसेसिंग हेला, इनफॉरमेशन टा सेंड करा गला ब्रेन को, सुनिला परे प्रोसेसिंग हेला परे ब्रेन मीनिंग आइडेंटिफाई करिवो कि व्हाट आई एम गोइंग व्हाट आई एम टीचिंग टुडे, किंबा इनफॉरमेशंस टा कोन जे मु दउची सेटा ब्रेन तापरे प्रोसेसिंग कला परे किंबा इंटरप्रेट कला परे ही कहि पारुची. Neurons are of different sizes and shapes. You see, there is no single shape of neuron. They are available in variety of sizes, in variety of shapes, but we can confine neurons into three major specific structure, whether we can say they are known as, they are discussed in next slide. Just see. These are the three basic components. These three are the three basic components of neuron. Components or structures we can say. Which are known as cell body, dendrites and axon. These are the basically three basic structure of the neuron. Within it, we have to understand what is terminal buttons and what are the what is known as the myelin sheath and what is its functions there. So first let's try to understand
What is cell body? You see the cell body is the enlarged head of the neuron. Simultaneously I am showing the diagram so that it would be easier for you to understand. This is the diagram, graphical structure of the neuron. First we must know cell body, which is also known as the soma, and that is the first basic structure of neuron, and soma is this. Okay, soma is covered is this part is known as the soma, and this structure, it is shown there also. This part is known as the soma, and here in the middle part what you are seeing, this is the head of the neuron system. एटा को आमे न्यूरन रो मुंडो बोली भी धरी थाउ. ए मिडल रे गोटे देखुथिबो से बॉडी सेल बॉडी भितरे गोटे अछि, सेटा को जाउची न्यूक्लियस. ओके, सो व्हाट इज द सेल बॉडी डू? सेल न्यूक्लियस कौनटा होची देखो, एटा कहा जाउची न्यूक्लियस. द सोमा और सेल बॉडी इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन containing nucleus. एटा हमरो सेल बॉडीटा, एई जो सेल बॉडीटा कवर्ड हेछि न्यूक्लियस को द्वारा. ओके, एवं सोमा कोन करछि? सोमा uses oxygen and nutrients to generate energy to carry out the work of the cell. So सोमा कोन करछि हमरो जोटा कि हमरो सेल बॉडी रे जाउछि. सोमा it uses oxygen and nutrients काहे की दरकार? टू जेनरेट एनर्जी. सेति पई याकू हमरो देखो इट इज द सर्वाइवल वैल्यू अच्छी, कहीं ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करूची. सेति पई हमें याकू हेड ऑफ द न्यूरॉन बोली भी धरी थाउ. कहीं ना कौन सी जिनिस कार्य करने कैरी आउट करने यू नीड द एनर्जी, एंड एनर्जी विल गेट थ्रू इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन व्हिच हैज द सर्वाइवल नेसेसिटीज इन ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट कम टू द डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स आर द thin structure. Next, second structure of neuron we'll discuss. These are the dendrites part. All this thin structure you are seeing na. This thin structure, this is dendrite, this is dendrite. All the thin structures you are seeing it, these are called as the dendrite. So here ए तळे भी जोटा देखुछ एठी ऊपर मेंशन करा हिची डेंड्राइट. ए तळ गुडा को भी होची हमरो डेंड्राइट. जो पतला पतला जाइछि तो एक्सन ठू लागि की सेटा को कहा जाउछि हमरो डेंड्राइट. गॉट इट? तो डेंड्राइट्स आर द डेफिनेशन होछि डेंड्राइट्स आर thin structures. नेक्स्ट, डेंड्राइट्स ता कोन होछि? डेंड्राइट्स होछि हमरो thin structure पतला स्ट्रक्चर जोटा रहुछि एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी. सेल बॉडी रो ही एक्सटेंडेड हेछि. देखिला कोठो एक्सटेंड हेछि? एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल बॉडी. Extended from cell body. Got it? And there are several extensions from the cell body. आमे ऊपर भी several extensions आमे देखिले, तळे भी हमर several extensions from the cell body एटा हेछि. एवं it resembles like a tree. गोटे ट्री रो गोटे branches आमे जेतले figure out करथबा, graphic करथबा, it resembles like a tree and it receives neural impulses from the receptors or from several adjoining neurons. एटा तो receives information कोठु करूची from the receptors. आमे receptors कोन? It receives informations from the receptors.
आम आमर 8 प्रकार रिसेप्टर्स अच्छी रिसेप्टर्स टाको कहा जाउची गेटवे ऑफ इंफॉर्मेशंस कहीं आम तारी माध्यम रे आमे वी आर नोइंग द वर्ल्ड वी आर आइडेंटिफाइंग मीनिंग of every acts and every responses we try to understand every responses of behavior okay so sei bhade amara 8 kinds of receptors achi human body re jemti ki first hela visceral hela jota ki visceral receptors are connected to the eye ame akhi ru dekhi ki konosi jinisata jani paruchu ki yes I am जहाँ किसी भी एटा बस टे किंबा टेबुल टे किंबा एटा हैला मोर एई सांग किंबा एटा होचंती मैडम किंबा व्हाटएवर बाय सीइंग डायरेक्टली वी कैन फाइंड मीनिंग दैट व्हाट आई एम एबल टू सी व्हाट आई एम सीइंग एट ओके मु कोन देखुची किंबा कोन करूची तो से देखिबार ही आमे मीनिंग टा डिराइव करछु सेई बळिया होची ऑडिटरी फर्स्ट हैला विसरल दैट इज रिलेटेड टू योर आई रिसेप्टर्स द नेक्स्ट हैला ऑडिटरी होची तमरो कान माध्यम रे ईयर कान माध्यम तुम किछिटा इनफॉरमेशन शुणिकी तुम मीनिंग बाहर करटा हूँ तुम ऑडिटरी नाउ यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल बाय थ्रू योर ऑडिटरी रिसेप्टर्स एज वेल एज योर visceral receptors are also working at because you are able to sing my talk simultaneously physically through the online mode. Next, olfactory is our receptors here work nose okay olfactory रे हमर नाकटा काम करूची नोज टा काम करूची काहे ना हमें सुंगी की भी हमें जानी पारुछे कि व्हाट इज द स्मेल इज अबाउट आज घरे को जिनिसटा मामा रोसई करछंती वेदर इट इज समथिंग लाइक पिठापणार बासना किंबा मटन र बासना किंबा जहा को जो जिनिस भल लागछ हम स्मेल करी कि हमें जानी परछु कि यस द फूड इज टेस्टी और नॉट दैट कैन ओनली बी असेस्ड थ्रू द olfactory receptor. गस्टाटरी होची टंग आमे टंग टारे टेस्ट करी कि आमे जानी परछु यस द फूड इज वेरी सॉल्टी और फूड इज वेरी शुगरी और फूड इज विदाउट शुगर और विदाउट सॉल्ट वी कैन वेरी वेल टेल दैट इज कॉल्ड एज द गस्टाटरी रिसेप्टर. टेक्चुअल दैट इज द स्किन आमको टेक्चर हला स्किन रो आमे जानी परिबा कि हमरो इंफॉर्मेशन आसी थाए very important very interesting example is that हम सिंपली हमको संध्या समय हो कि राति रे हो हमको गोटे मशाटे कामुड़िला आम केमती जानिबा थ्रू द स्किन रिसेप्टर स्किन रे आमर सेटा ब्रेन रे एक्सेस होला पर आगो मशाटा कामुड़िला इनफॉरमेशंस गला ब्रेन को ब्रेन तापरे इंटरप्रेट कला कि बॉडी रो को पार्ट रे मशाटा कामुड़ुची गोड़े कामुड़ुची मुंडरे कामुड़ुची हाथ रे कामुड़ुची तापरे आमे आम हाथटा ताकू स्लैप करिया पई जाय किबा सिंपली घोड़ी देवा पई जाय. नेक्स्ट हूँ तुम लैब्रिथिन रिसेप्टर हूँ तुम इनर एयर और कोक्लिया मेकिंग अ सेंसिटिव अबाउट द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी इन स्पेस. काइनेस्थेटिक रिसेप्टर हूँ तुम डीप जॉइंट्स एंड मसल्स रिसेप्टर टाइप कह जाउची. विसराल होची इंटरनल ऑर्गेनिक सेंसेशंस जहाँ किसी भी इंटरनल ऑर्गेनिक सेंसेशन तुम चेस्ट पेन होची किंबा तुम स्टोमक रे कौन पेन होची इंटरनल ब्लीडिंग होची दीज आर कमिंग अंडर द visceral sensations or visceral receptors. So specific stimulations are received by specific receptors which help in sensing and deriving meaning of the external world. ए receptors गुड़ाक गोटे गोटे specialized informations आम पाखक पहुँचाई थांती एवं तांकरी माध्यम रे आमे external world रो meaning किंबा बाहरी दुनिया रो meaning टा आमे बाहर करिया को चेष्टा करता through the sense organs. नेक्स्ट इज टर्मिनल बटन. जस्ट देख तुम पिक्चर टा देखिले भल भाव जानी पारिबो. टर्मिनल बटन्स टा सब बड़े एक्सन रो लागी के ए जो लास्ट रे थाए दीज आर द कॉल्ड एज द टर्मिनल बटन्स. देखो ए जो टर्मिनल एटा को कहा जाउची टर्मिनल बटन्स सब हैला. तो डेंड्राइट्स जानले आमे आगो एक्सन टा जानि जिबा तापरे टर्मिनल बटन्स कोन. सेकंड स्ट्रक्चर आमे जानिले डेंड्राइट कोन जानिले तापरे आसो थर्ड स्ट्रक्चर होची जोटा कॉमन स्ट्रक्चर आछि एक्सन. एक्सन होची द लॉन्गर सिंगल ब्रांच्ड एक्सटेंशन. लॉन्गर सिंगल ब्रांच्ड एक्सटेंशन ए जो देखो लॉन्गर सिंगल ब्रांच्ड एक्सटेंशंस एटा ए जिनिसटा कोहा जाउची एक्सन. लंबा आइके आके गोटे जाउची दिस इज कॉल्ड एज द एक्सन. एक्सन्स आर वेरी थिन एंड लॉन्ग.
another distinct feature देखो एटा भारी पतलिया हेकी अछि axon टा and another distinctive feature of axon is that myelin sheath is found in axon. Okay, myelin sheath is found in axon and what happens in myelin sheath, you see its functions include protecting information while traveling through axon. It also serves as to increase the velocity with which the electrical impulse travel the axon. Next, myelin sheath टा हमर ए जगटा गुडा कहउची myelin sheath हमर होउची एटा को कहा जाउची myelin sheath. Next come to a structure सब जाक बुझे देली terminal buttons myelin sheath. Next, what are the types of neurons we generally know? There are variety of neurons are there. There are basically three types of neurons are there. One is known as afferent neuron, which is also known as sensory neuron. Got it? This is also known as sensory neuron. This is motor neuron. And supporting cells are, other than this sensory and motor neuron, other cells are also responsible for executing certain kind of functions that are called the supporting cells. First देखो afferent neuron, it carry messages from sensory receptors. Afferent neuron, as the name indicating, it carry informations from sensory receptors. तो मानन को 8टा sensory receptor मु कहिली, it carry information from sensory receptors informations the sensory receptors through asila pore, it sends that messages to the brain, then brain interpret the message, exact meaning of the message or exact definition of the information. मने करो गोटे particular जिनिसटा आमे कहि पारुछु कि yes this is a mobile. Okay, तो exact information टा केमती आसिला आमे देखिलु आगो ऑब्जेक्ट टा को देखिलु, then brain process करला कि yes this is known as the mobile. ये इनफॉरमेशन टा आसिला पर आमे मोबाइल टा बोली कहि पारिलु. तो एनीथिंग आमे कोनोसी साउंड आकार रे हो किबा टेस्ट आकार रे हो कोनोसी जिनिस आम आगो रिसेप्टर्स माध्यम रे जाउची ब्रेन को, ब्रेन रे प्रोसेसिंग हैला पर इंटरप्रेट को ब्रेन ता पर इंटरप्रेट करोची एवं हमकु जणोची जे से इनफॉरमेशन इज व्हाट इज द इनफॉरमेशन इज अबाउट. नेक्स्ट होची तमरो मोटर न्यूरॉन. Motor neuron होची it carry information from central nervous system to glands and muscles. Efferent neuron जोटा कि motor neuron भी कहा जाए, इटा actually होची it carries information from central nervous system to glands and muscles. जहाँ किसी भी आमर आउटवर्ड एक्टिविटीज आवर आउटवर्ड एक्शंस मूवमेंट्स होची और रेस्पॉन्सेस देखुछ, इट इज बिकॉज ऑफ द
efferent neuron आमर जदि आमे जते भोक लागुची इट्स हंगर ड्राइव क्रिएट होउची बॉडी रे तापरे आमे खाइबा आड़ को मुहोचु किंबा खाइबा को जाउछु सिमिलरली व्हाट एवर द एक्टिविटीज यू आर शोइंग जदि कि मोबे ठिया आइची दिस इज बिकॉज ऑफ द efferent neuron I am doing it ओके किंबा सिंपली तमे नाचुछ दौड़ुछ व्हाट एवर द फिजिकल एक्टिविटीज यू आर शोइंग अप that are the result of the efferent neuron. Supporting cells, as I have written already, it is whatever other than this efferent and afferent neuron, other cells are available, which is also a type of neuron that is called as the supporting cells. So one such example, it is very much essential to protect and support the neuron. Supporting cell कौन करुची? Supporting cells करुची, it protects and supports the neuron. Got it? तो से भलिया गोटे एग्जांपल हेई परिबो तमरो प्रोटेक्टिंग सेल रे गिला सेल्स जोटा कुआ जाउची गिला सेल्स कौन करछि गिला सेल्स has basically supply chemicals to neuron and exchange messages with other neuron एटा केमिकल सप्लाई करुछि एवं अदर न्यूरॉन सहित बाय मीडिया कम्युनिकेशंस क्रिएट करुछि so these are about the types of neurons. Next proceed to other parts. These are the functions of neuron that we need to understand. First is neuron acts as a communication of messages. The important function of neuron is to communicate messages of stimulation in the form of nerve impulses. Sensory neurons, that is called afferent neuron, come from receptors and go to the brain, and motor efferent neuron go to the muscles and glands that we discussed. The interneurons are the linking neuron. Neurons also send nerve impulses when we are asleep. तो information आमे जानी ले कि afferent neuron एवं efferent neuron दुईटा जाक बहुत important criteria in communications of informations. Afferent neuron रे हमर informations brain को जाउची, brain को गला परे ही आमे जानी पारुचे कि कोन receptors माध्यम रे brain को जाउची. Similarly efferent neurons रू हमर brain रू हमर muscles किंबा glands आड़ को informations आसुची. आउ खाली जे alert किंबा awareness रे neurons काम करे सेंती नुह. Neurons is active, nerve impulses are active when we are asleep also. Neurons execute its functions and it continues its works. So next question arises, how do the neurons serve this communication function? समस्तंका मन रे आसीची कि केमिति न्यूरॉन्स टा एग्जीक्यूट करूची. आमे जानिले जे इट्स ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करूची, बट केमितिया करूची दैट आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, फॉर दिस यू जस्ट सी द सेकंड पॉइंट. It carries chemical particles that have electrical charge called ions. Much of the neurons activity depend upon the difference between the chemical inside and outside of the nerve cells. A chemical particle that carries electrical charge is called as ions. Ions have either positive or negative charges. Ions have either positive or negative charges. It is important to remember opposite charges attract each other and like charges repel each other. आमे जानी छे जे opposite charges attract each other whereas like charges repel to each other. Next, there are fluids in neuron. There are
fluids in there are fluids in and around the neural membrane, and the fluid inside the membrane is called as the intracellular. दुई प्रकार न्यूरॉन अवेलेबल होची जोटा न्यूरॉन भितर न्यूरॉन मेम्ब्रेन भितर रहउची ताकू इंट्रासेल्युलर कहउचंती हला. इट इज इनसाइड द न्यूरॉन. आ जोटा आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन रहउची ताकू कहा जाउची एक्स्ट्रासेल्युलर. ए दुईटा जाक executions of work are many. Both these fluids contain varying concentrations of ions, that is varying constituents रखिबो. ए दुईटा जाक ions काम करे जेमति कि तमर सोडियम हैला, पोटेशियम हैला, क्लोराइड हैला and many other. Okay, all our behavior activities like attention, learning, speaking, thinking, working are caused by these ions. Okay, whose exchange generate the nerve impulse. जहाँ किसी भी availability हमर सोडियम रहउची, पोटेशियम रहउची, क्लोराइड which are very essential for the human functioning of the nerve impulse. आमर देखिबो टिके जदि imbalance हेले ए जो कहिली तुमको सोडियम हैला, पोटेशियम तो हेले आम ह्यूमन फंक्शनिंग विल बी डिफरेंट. तो आमर जो थॉट प्रोसेस हैला किंबा आमर हैला आमर थिंकिंग हैला, आमर वर्किंग स्टाइल हैला, वर्किंग आमर नर्व रे जदि किछि ब्लॉकेज रहइबो योर वर्किंग प्रॉब्लम विल स्टार्ट. Similarly, our sodium potassium जदि imbalance रहिबो, the persons might not speak fluent whatever language he speaks, it cannot be understood by the other people. Okay, तो से ए सब जिनिस आमर बॉडी रे पर्टिकुलर मेंटेन बाय द फ्लुइड्स आम न्यूरॉन रे रहउची जोटा कि हमकु बॉडी रे प्रॉपर मात्रा रे बैलेंसिंग रखुची, प्रॉपर मात्रा रे कौन कहबी ए सब जो हार्मोन्स हो किंबा न्यूरोट्रांसमिटर्स हो से गुडा को रहिबा पई कार्य करूची. नेक्स्ट हला तमरो रेस्टिंग पोटेंशियल. रेस्टिंग पोटेंशियल कोन? When a neuron is in a resting state, there is a negative electrical charge of about -70 millivolt. -17 millivolt. जेते बेले रेस्टिंग पोजिशन रे कोन होउची नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज हुए एवं आमर -70 मिलीवोल्ट आमर आसी थाए. Ebong, this is called as the resting potential. So meaning is that when a neuron is in a resting state, there is a negative electrical charge of about -70 millivolt. This is called resting potential. It does not come automatically. The neuron works to maintain its resting potential. It pumps out the positively charged ions to its outside and only keep the negatively चार्ज आयन्स. एटा ऑटोमेटिक हुए नाही काई कि ना आमर न्यूरॉन टा पंप्स आउट पॉजिटिव आयन्स टा को बाहर कर दे एवं इट कीप द नेगेटिवली चार्ज आयन्स को भीतर ही रखी थाए. नेक्स्ट आसो एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल. Action potential is basically the communication within neuron. Action potential is the most basic signal of the nervous system. It moves from one end of the brain, one end of the axon to the other. It consists of a rapidly moving wave of depolarization. As the action potential moves, the negatively charged across the cell membrane briefly disappears, largely as a result of positively charged particles moving inside. After the action potential passes,
the particles are actively pumped back outside and the negative potential is restored. Next, come to the absolute refractory period. This is called as the no action period also. Just after the action potential, there is a brief period when the neuron is inactive. During this period, the neuron is in resting potential, that is resting time is usually less than 1000 of a second. Resting time ta kono during this time 1000 of a second. When this short period of refractory is over, the neuron can again active with a strong stimulus, that is that it can now carry a nerve impulse. Eta hochi inactive period for very brief period time pai asi thae, jo thari kari neuron basically inactive thae au kai kina ame taro resting time taro usually less than 1000 of a second rahi thae, kintu eta permanent no thae, it can be recover again where nerve impulse can be again execute the process of informations. It a brief period by अल्प समय परे after just after the action potential आसी थे. Next is all or non law. When a neuron is adequately stimulated, an electrochemical reactions occurs inside. आमर न्यूरन टा जते बड़े एडिक्वेटली स्टिमुलेट हैला आमे जानिले जे इलेक्ट्रोकेमिकल भी ऑटोमेटिकली ता सांगरे सांगरे आमर इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस चार्ज થઈ જાય आम बॉडी रे. लाइक ए गन न्यूरन फायर और डू नॉट फायर, देयर इज नो स्टेज इन बिटवीन. गॉट इट. এই law কোন কହୁছি, the neuron follows a law called all or non law. This law states that neurons fire or do not fire, there is no stage in between. It means either it occurs at full strength or it does not occur at all. Neuron kono kauchi, neuron can be with you, it will occur with full strength or it does not occur at all. There is nothing in between. Got it. If you pull a example dekho, if you pull a trigger of the gun, the gun fires. Better firing does not link to low pressure or higher pressure of triggering. गोटे moderate amount of triggering रे तमरो जति की मात्रा रे गन टा माने बुलेट टा जिबा कथा सेति की ही जिवो. जोर रे दाबिले जे तमरो जोर रे बुलेट टा जिवो कहि की हेबनी, किंबा कम दाबिले एटा कम पाख को जीव बोली नाही. गोटे मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर दरकार, सेतिक रे ही सेटा काम करबा. सेमितिया ही एग्जैक्ट सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ न्यूरॉन्स. तमरो बॉडी रे न्यूरॉन्स अछि, तो न्यूरॉन्स जदि अछि तम पाखरे द लॉ स्टेट द न्यूरॉन्स फायर और डू नॉट फायर, काईकिना हमरो इट मीन्स आइदर इट ऑकर्स एट फुल स्ट्रेंथ, तम बॉडी रे न्यूरॉन्स अछि माने एटा काम करबा फुल स्ट्रेंथ रे, आ जदि नाही एटा करबो नाही, बिल्कुल करिबो नाही. देयर इज नो स्टेज इन बिटवीन किंबा मिडल स्टेज टा नाही बोली एक्शन पोटेंशियल लॉ टा प्रिंसिपल टा न्यूरॉन हमर फॉलो करछि. नेक्स्ट आसो how the transmission occurs, neural transmissions occurs, that we try to understand. Communication between neurons, आमे देखिबा एथरे दुईटा जिनिस काम करथांती. गोटे होची नर्व इंपल्स, जोटा आमे जानिले कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट्स विद इन द नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स. ओके, and when the nerve impulse arrives at the end of axon or axon terminal, it has to cross a gap to get to the next neuron. The gap is called the synapse.
जो गैप टा थाए ताकू तुमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रे भी देखि दोची साइमल्टेनियसली सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड आमर गैप कोटा नर्व इम्पल्स तो आमर जानुची आमर साइनाप्स टा होची कि आमर गैप इट गैप टा रहिला सेटा आमर साइनाप्स फील करची साइनाप्स रो मीनिंग बुझो इट मेक्स फंक्शनल कनेक्शंस विथ डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन एटा करा कोन करची फंक्शनल कनेक्शंस विथ डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स रे आमर साइनाप्स टा काम करची तो द गैप टा जो कहली मु तुमको इट हैज टू क्रॉस ए गैप टू गेट जो किछिटा जगह रे जो गैप टा पूरण करि पारुनी न्यूरॉन से जगह रे हमें साइनाप्स टा को व्यवहार करछु एज ए इंटरफंक्शनल अप्रोच टू कम्युनिकेट विथ द अदर न्यूरॉन्स ओके सो synapse is basically a minute fluid field junction through which neurons communicate chemically. The chemical transactions of communications are also possible in terms of जो जगार न्यूरॉन्स किंबा नर्व इम्पल्स करि पारु नाही से जगार साइनाप्स बाय मीडिया काम करिकी से कामटा करूची देख ये तुमकर साइनाप्सटा कहली तुम ए जो गैपटा कह जाउची दिस इज साइनाप्टिक क्लेफ्ट ए भितरे एवं या भितरे गोटे गैप रोची इट इज कॉल्ड एज द synaptic cleft that is the chemical substance synaptic cleft ta kon hochi kalo there is a gap between the two a neuron is never physically connected with another neuron ta कहली ना न्यूरॉन टा आउ गोटे न्यूरॉन सहित फिजिकली कनेक्टेड हुए नहीं गोटे गैप थाए से गैप टा को पूरण करे थाए एटा साइनाप्टिक क्लेफ्ट टा पूरण करथाए देखो साइनाप्टिक क्लेफ्ट गॉट इट एंड दिस इज द साइनाप्टिक वेसल्स एटा होची साइनाप्टिक वेसल्स टर्मिनल बटन्स आर देयर टर्मिनल बटन आमे जानिछु एवं न्यूरो एई सब जो जाउछंती एगुडा को कहा जाउछि हमर न्यूरो ट्रांसमिटर्स बोली आमे तांकू कहि थाउ एवं डेंड्राइट्स तो आमे जानिछे डेंड्राइट्स टा रहिला स्मॉल स्ट्रक्चर थिन स्ट्रक्चर तो neurotransmitters कौन होची द केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द neurotransmitters कौन द केमिकल सब्सटेंस chemical substance are known as neurotransmitter chemical substance are known as neurotransmitters So neurotransmitters play important role in communicating messages across the millions of neurons all over the body. तो जेहेतु एटा गोटे केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमिटर अक्रॉस द बॉडी पर बहुत इंपोर्टेंट वर्क काम करता है कहीं ना कम्युनिकेट मेसेजेस सबू जगार पहुँचापी न्यूरोट्रांसमिटर्स acts as a tool to reach each and every segment of the cell. Some of the important transmitters we must know what are the important transmitters are there in doing so. Let's try to understand it. Okay. Here I am giving some of the important okay, does not matter. स्लाइड आनी केमती आनी गोटे मिनट हाँ ना ना स्लाइड नहीं ब्लैंक सीट दरकार ये चर्च करिए ओके लिखा हुआ होनी कहीं हाँ लिखी
ब्लैंक लिखिए हाँ दूसरी क्लिक ऑन ब्लैंक है एटा एटा हां एटा सॉरी सेकंड करछि बा देन आइटम देखो ओके डायरेक्टली मु सेठी कलाल कटि ओके पेंसिल ले क्लिक करिए पेंसिल ना ना होनी ओके चलो क्लिक एटा ओके ओहो मु से ऊपर करथि एनीवे so there are variety of neurotransmitters are there with that you need to understand because they are primarily responsible for communicating messages across millions of neurons all over the body. So here are some of the neurotransmitters and we'll also discuss the effect. Neurotransmitters what are its effects we understand. First we write down some of the important neurotransmitters. Dopamine, then norepinephrine, next serotonin, next तमर आसिला acetyl choline, so now let's discuss what are its these are some of the neurotransmitters I have written. Some there are other than this many neurotransmitters are available, but I have mentioned some of the important neurotransmitters and try to relate it with you, try to acquainted with you with its effect. Dopamine jota ki involves in movement, attention and learning. Dopamine is basically involves in movement, attention and learning. Norepinephrine कौन करछि? It involves in control on alertness and wakefulness. Control over alertness as well as alertness and wakefulness. Serotonin, it involves regulation of mood. Serotonin regulation of mood रे काम करछि हमरो. And in control of eating, sleep, or arousal. Last one जोटा कि कहा जाउची acetyl choline. It involves in muscle actions, learning, memory. It involves in muscle action, learning, memory. तो आमर जिते बड़े हार्मोन आमे देखिले एगुड़ा को किछिटा लिखि देछि just have a look. Dopamine ta it am movement. This neurotransmitter is very much essential in terms of movement of any activity as well as the kind of attentions we are put in while learning. This dopamine neurotransmitter is very essential. And at the same time norepinephrine is another neurotransmitter which is responsible for our control of alertness and wakefulness.
केति मात्रा रे आमे वेकफुल रहिबा जेमति कि हमको स्लीप इज आल्सो रिक्वायर्ड बट आफ्टर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बीइंग अवेक ओके तुमको सोइबाटा भी निहाती दरकार काहे की दरकार बिकॉज इट विल एक्ट एज द एनर्जी to rework again when you will try for the second initiative of wakefulness तो से आमे केते मात्रा रे आमे वेक रहिबा दरकार एवं केतेटा जगह रे आमे कंट्रोल करिया दरकार को पर्टिकुलर जगह रे आमे वेकफुल हेबा कथा नुह सेटा हमर नॉरफाइनफ्रिन करूची सेरोटोनिन रेगुलेशन ऑफ मूड करूची आमे जे खुशी होछु एट द सेम टाइम आमे कष्ट अनुभव करछु कष्ट अनुभव करले पर पुणी खुशी हेबार जो इन बिटवीन टाइम टा रहूची रेगुलेट करूची माइंड टाकू किबा इमोशंस टाकू एटा होची हमर सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा एवं आमर कंट्रोल करूची आमर स्लीप बिहेवियर ईटिंग एवं अराउजल को लास्ट वन बेसिकली आवर मसल एक्शन टाकू रेगुलेट करूची द काइंड जेमति कि आमे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर मसल्स इन आवर leg हो हाथ हो कि other parts of the body and it also it involves in learning as well as in the memory the kind of your तमर learning किंबा memory को affect करूची एई हार्मोन टा जोटा कहा जाउची acetylcholine other than this also variety of hormones are neurotransmitters are there but I have mentioned these 4 only so this is for today's class on neuron tomorrow on Monday I will come with another topic thank you so much आज तो मु बायोलॉजी पढ़े